Ladies and gentlemen, presenting an aerial salute will be 3 May 17 1V helicopters of 129 helicopter unit. राष्ट्रीय सलाम सलाम चक परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है महोदय। The President, accompanied by the Parade Commander, Group Captain K.S. Tanu Nair, will now review the parade. The Honorable President of India, Smt Droupadi Murmu, was sworn in as the 15th President of India on 25th July 2022. Previously, she was the Governor of Jharkhand from 2015 to 2021. She has devoted her life to empowering the downtrodden and the marginalized sections and deepening the democratic values. Born in a Santhali tribal family on 20th June 1958 at Mayurbhanj, Odisha, Srimati Murmu was the first woman from her village to receive college education. She earned a degree of Bachelor's of Arts from Ramadevi Women's College. In the year 2000, Srimati Murmu was elected as the Rairangpur constituency member of the Legislative Assembly of Odisha and continued to hold the post till 2009, serving 2 terms. During this period, she served as Minister of State, Department of Commerce and Transport in the Government of Odisha and Minister of State, Department of Fisheries and Animal Resources Development, Government of Odisha. In both assignments, she introduced innovative initiatives and people-oriented measures. Parade Adjutant, Flight Lieutenant Vishesh Chaube. Number 1 Squadron, commanded by Wing Commander Bijoy KP. Number 2 Squadron, commanded by Wing Commander Praneet Kumar Tangula. Number 3 Squadron, commanded by Wing Commander M.V. Sriharsha. The Nishan Toli, led by Wing Commander V.A. Nalge. Number 4 Squadron, commanded by Wing Commander Deepak Dogra. The Nishan Toli, led by Squadron Leader Rohan Shirolkar.
combined band led by Warrant Officer Robert John George. Number 5 Squadron, commanded by Wing Commander Arvind Ranjan. The Nishan Toli, led by Flight Lieutenant Yash Shirsagar. Number 6 Squadron, commanded by Wing Commander Pradeep Kumar Rathi. The Nishan Toli, led by Squadron Leader Deepak Kumar. Number 7 Squadron, commanded by Wing Commander M.K. Feroz. Number 8 Squadron, commanded by Wing Commander Adarsh Gupta. Smt Droupadi Murmu, with her rich administrative experience and with her tireless efforts to spread education in tribal societies, has carved a special identity for herself. For her services as a legislator, she was awarded the Pandit Neelkant Das Best Legislator Award in 2007 by the Odisha Legislative Assembly. श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखने तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से उनकी सराहना की गई। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों और भर्ती प्रक्रियाओं में अनेक सुधार किए। राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी निष्ठा के बल पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आदर उन्होंने अर्जित किया। श्रीमती मुर्मू ओडिशा के आदिवासी, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनेक संगठनों से जुड़ी रही। स्वाध्याय में उनकी गहरी आस्था है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने इस सम्मान को भारतीय सूरीनाम समुदाय की क्रमिक पीढ़ियों को समर्पित किया है। अलंकरण आरंभ करने की आज्ञा दे महोदय। Ladies and gentlemen, the standard and colors will be uncased
prior to being awarded to the units. Colors. A mark of honor were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on the 1st of April 1954, in recognition of its service to the nation. Colors, therefore, are highly revered and are displayed with due fanfare and honor on special occasions. The presentation of the colors to the Indian Air Force on 1st April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subroto Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. You may notice that the President's standard and colors have been placed on a pile of drums. This dates back to an age-old tradition, when soldiers headed for war arranged drums in the form of an altar to pray and seek blessings for victory in battle. Made of the finest Indian hand-spun silk, the President's standard and colors are carried on a 7-foot staff of seasoned ash wood. 7-inch gold-plated metal crest comprising 4 Ashoka lions mounted on 2 Himalayan eagles form the head of the staff. The field of the standard and colors is of Air Force blue with a border of Ashoka leaves and lotus flowers in an elegant arrangement containing the unit crest visible in the center. निशान धारक अभिजात विशिष्ट निशान अलंकरण के लिए मध्य से तेज चल। The Nishan-bearing officers are now marching up to receive the standard and colors from the Honorable President, the historic moment that the units have been waiting for. निशानधारी अधिकारी अब माननीय राष्ट्रपति से निशान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देवियों एवं सज्जनों, यह वो ऐतिहासिक क्षण है जिसकी इन चारों यूनिटों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। Ladies and gentlemen, the Honorable President will now present the President's standard to 45 Squadron and 221 Squadron. Receiving the President's standard on behalf of 45 Squadron is Group Captain M. Surendran and the Nishan bearer, Wing Commander V.A. Nalge, along with the unit's Commodore Commandant, Air Commodore Madhav Rangachari, Vayu Sena Medal. 45 Squadron, the proud recipient of President's Standard.
Receiving the President's Standard on behalf of 221 Squadron is Group Captain Shubhankan and the Nishan Bearer, Squadron Leader Rohan Shirolkar. 221 Squadron, the proud recipient of President's Standard. देवियों एवं सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया अब 11 बेस मरम्मत डिपो एवं 509 सिग्नल यूनिट को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रस्तुत करेंगी। हम आपको बता दें कि फ्लाइंग फॉर्मेशंस को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एवं ऑपरेशनल यूनिटों को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए जाते हैं। Receiving the President's Colors on behalf of 11 Base Repair Depot is Air Commodore Ashutosh Vaidya and the Nishan Bearer, Flight Lieutenant Yash Shirsagar. 11 Base Repair Depot, the proud recipient of President's Colors. Receiving the President's Colors on behalf of 509 Signal Unit is Group Captain Vivek Sharma, Vayu Sena Medal, and the Nishan Bearer, Squadron Leader Deepak Kumar. 509 Signal Unit, the proud recipient of President's Colors. Ladies and gentlemen, the President's Standard and Colors will now be accorded a general salute. All present are to rise in its honor. Uniformed personnel shall salute. अब प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एवं कलर्स को जनरल सल्यूट प्रदान किया जाएगा। अतः आप सभी कृपया इसके सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी गण सल्यूट करें। The Nishan bearing officers are now marching towards their respective Nishan tolis to the tune of Air Force colors. निशानधारी अधिकारी अब अपनी निशान टोली की ओर एयरफोर्स कलर्स की धुन पर आगे बढ़ रहे हैं।
आपके अभिभाषण के लिए तैयार है महोदया। The Honorable President of India will now address the parade. Red! Red! Jump! इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय सड़क और परिवहन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल PR चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, ऑफिसर्स ऑफ परेड्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। भारतीय सेना को 4 यूनिट्स को एक साथ स्टैंडर्ड्स और स्कॉलर्स प्रदान करके इस ऐतिहासिक अवसर पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं चारों यूनिट्स के सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और जवानों की देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहना करती हूँ। देश की रक्षा में भारतीय वायुसेना का योगदान स्वर्णाक्षर में अंकित है। इस सेना के वीरों ने 1948, 1965, 1971, 1999 के युद्धों में अद्भुत साहस, समर्पण और आत्म बलिदान का परिचय दिया है। उन्होंने शांति काल के दौरान भी देश विदेश में आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे वीर वायु सैनिकों द्वारा प्रदर्शित कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। ये बहुत ही खुशी की विषय है कि भारतीय वायुसेना न केवल देश के स्पेस की सुरक्षा कर रही है, बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम में भी अपना अहम योगदान दे रही है। वायुसेना के सभी अधिकारियों और जवानों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिन 4 एस्ट्रोनॉट का इसरो के गगनयान मिशन के लिए चयन किया गया है, ये सभी वायुसेना के अधिकारी हैं। देवियों और स्वजनों, इस तेजी से बदलते युग में रक्षा संबंधी जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही है। अन्य क्षेत्र की तरह रक्षा क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज केवल जल, थल और नभ की रक्षा की महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और लेबोरेटरीज की सुरक्षा की भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि विगत कुछ वर्षों से भारतीय वायुसेना आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना रही है। समकालीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अनुरूप वायुसेना का तेज गति से विकास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 1949 में गठित 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स ने 1965 एवं 1971 के युद्धों के दौरान अपने अनेक ऑपरेशंस को अंजाम देकर सम्मान अर्जित किया। वैम्पायर्स विमानों से शुरू हुई इस स्क्वाड्रन की यात्रा नाइटन्स एवं MiG-21 से होते हुए आज स्वदेशी तेजस विमान के माध्यम से आगे बढ़ रही है। वर्ष 1963 से गठित 221 स्क्वाड्रन वालियंट्स ने भी 1965 और 1971 के युद्धों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। इस स्क्वाड्रन ने बांग्लादेश मुक्ति संघर्षों के दौरान आक्रमण युद्ध शैली व कुशलता से अपना नाम स्वर्णिम अक्षर से अंकित किया है। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान भी भारतीय वायुसेना के कुल मिशन में
1/4 से अधिक मिशन इस स्क्वाड्रन ने संचालित किए थे। 11 बेस रिपेयर डिपो भारतीय वायुसेना का एक अग्रणी रिपेयर डिपो है। मुझे बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र संस्थानों का ये पहला डिपो है जिसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन द्वारा अप्रूव्ड डिजाइन एंड लाइफ एक्सटेंशन एजेंसी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस डिपो ने लड़ाकू विमानों के लाइफ एक्सटेंशन का अध्ययन करके और उनका कायाकल्प करने में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। रखरखाव में स्वदेशीकरण की अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों की ओर भी कदम बढ़ाया है। 509 सिग्नल यूनिट उन वायु रक्षा प्रणालियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है जो सभी हवाई गतिविधियों की निगरानी करती है। ये यूनिट सतत तत्पर के अपने आदर्श वाक्यों पर निष्ठापूर्वक अड़िग रही है। देवियों और स्वजनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बेटियों बहनों विशेषकर महिला वायुसेनाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस वर्ष के महिला दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं में महिलाओं की समान अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्हें वायुसेना में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बेटियां वायुसेना में भर्ती होंगी और देश की सेवा करेंगी। महिलाओं की संख्या बढ़ने से वायुसेना और भी अधिक समावेशी होगी। मैं एक बार फिर चारों यूनिट्स के सभी पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों और जवानों की राष्ट्र सेवा के लिए सराहना करती हूँ। सभी देशवासियों को आप पर गर्व है। आपके और आपके परिवारजनों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति को जयकार बोलेंगे। राष्ट्रपति के परेड। भारत माता की जयकार बोलेंगे। भारत माता के अलंकृत स्क्वाड्रनों को निशान के साथ मंच से गुजरने की आज्ञा दे महोदया। परेड निकट लाए चक। अलंकृत स्क्वाड्रन निशान के साथ मंच से गुजरेंगे। नंबर 3 स्क्वाड्रन आगे। अलंकृत स्क्वाड्रन निशान चला। दैन्य दिशा वर्गीमान। दैन्य बंद। The parade commander is now marching to take his position at the helm. In a few moments, the parade will begin its march to the tunes of Sound Barrier and Astronaut.
Ladies and gentlemen, when the President's standard and colors march past in front of you, please rise in its honor. Ladies and gentlemen, when the President's standard and colors march past in front of you, please rise in its honor. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सल्यूट करें। Decorated squadrons will now march past in front of dais. You can see the air warriors as they approach the saluting dais, marching smartly in impeccable turnout with their heads held high.
Indian Air Force has rendered yeoman service in times of disasters. All available resources have always responded to enormous challenges with speed, resolve and fortitude. Over the years, constant transformation has come about by rapid technological advancements. This transformation draws its sustenance from the caliber, commitment and the single-minded focus of our proud men and women who excel in their daily missions. Operating in some of the most challenging and diverse operational environments of the world, they resolutely strive to uphold all the noble values and ideals that truly symbolize the air warrior spirit. Standing at the threshold of a new beginning and looking back proudly at 9 decades of a glorious past, we salute the pioneering spirit and resolute service of our predecessors. It is indeed this pride in our rich legacy which strengthens our steely resolve to take the transformation to its logical conclusion. The Indian Air Force today is a formidable force. We have amongst our assets a fleet of state-of-the-art fighter aircraft, air defense missiles and modern radars that guard our nation's skies round the clock. Our fleet of transport aircraft and helicopters gives us the reach and flexibility for quick deployment, making us a highly responsible and effective force to reckon with. The intensive operational training that is of paramount importance helps us maintain a disciplined, efficient and motivated Air Force through our training institutions spread across the country. Our training facilities rank among the best in the world and our skills have been acknowledged by other air forces, especially during our participation in international air exercises with friendly nations. निशानों को परेड से ले जाने की आज्ञा दे महोदया। निशान चले, निशान को ले जाओ, निशान चले, जगह बंद। निशान चले,
Nishan Tolis will now leave the parade ground. Ladies and gentlemen, when the President's standard and colors march past in front of you, please rise in its honor. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे, कृपया उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सल्यूट करें। अब राष्ट्रीय सल्यूट प्रदान किया जाएगा। कृपया आप सभी इसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं सल्यूट न करें। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, जय।
मुख्य पत्र अनावरण के बाद परेड को ले जाने की आज्ञा दे महोदय। Ladies and gentlemen, the Honorable President will now release the special cover and brochure of 45 Squadron, 221 Squadron, 11 Base Repair Depot and 509 Signal Unit. This contains information about the units and their rich history. माननीय राष्ट्रपति महोदय, 45 स्क्वाड्रन, 221 स्क्वाड्रन, 11 बेस मरम्मत डिपो एवं 509 सिग्नल यूनिट से संबंधित स्पेशल कवर और ब्रोशर का विमोचन कर रही हैं, जिसमें यूनिट का इतिहास एवं यूनिट से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। While a first day cover is issued along with a commemorative postage stamp, a special cover is issued in isolation to mark significant events like the one we are witnessing today. Army Postal Service Corps has been given mandate by Department of Posts to bring out special cover with special cancellation and information brochure on various defense units, establishments and formations to commemorate occasions like presentation of President's Standard and colors. The special covers will now be signed by the Honorable President. These brochures and covers will take their rightful place as the centerpiece in the museums of the formations which have been felicitated today and continue to motivate the future generation of air warriors. आपकी बेकरी का क्या हुआ? बढ़ते खर्चे